for creating presentation in the form of computer-based slideshow. These can be used for presentation, demonstration, or web-based slideshow. A PowerPoint presentation is a computer file with .ppt extension. Is the computer file containing the slides including graphics, animation, sound and video etc. पावरपॉइंट की जो स्लाइड्स होती है एग्जैक्ट में उसका जो एक्सटेंशन होता है उसे कहते हैं .ppt. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछा भी जाता है. PowerPoint views. There are three different views to work with the slides. These are normal view, slide sorter view and slideshow. Either use view button at the bottom of outline view area or use the view menu option to switch between these views. Normal view. Normal view is called the default outline PowerPoint view. It is used to डिजाइन एंड मॉडिफाई योर प्रेजेंटेशन. इसी व्यू के अंदर हम लोग वर्किंग करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन अपनी बनाई जाती है तो हमारे इसी व्यू में. देयर आर थ्री वर्किंग एरिया इन द व्यू. ऑन द लेफ्ट देयर आर टू टैब्स used to show the title, main text from each slide. This is outline tab. Next slide tab used to show the presentation slides as thumbnail. The slide pane show the large view of current slide. There is note pane to add the notes related to each slide at the bottom of slide pane. The size of these panes can be adjusted by dragging the splitter between the panes. अगर किसी स्लाइड्स के लिए आपको नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप नोट्स पेन पर क्लिक कर सकते हैं. जो भी नोट्स आप लिखेंगे फुल स्क्रीन पर व्यू में आपके अपीयर नहीं होंगे, केवल जिस समय वर्किंग करते हैं उसी समय आपके व्यूज आपको शो करेंगे कि ये स्लाइड्स आपने क्यों बनाई है, ये जिसके बारे में टॉपिक में आप नोट जो ऐड करें. नेक्स्ट इज स्लाइड शॉर्टर व्यू. You can view the presentation slides in thumbnail using slide sorter view. You can use this view to reorder, add or delete slides. इस केस में क्या होंगे, स्लाइड छोटी छोटी होकर आपको स्क्रीन के ऊपर सर्व हो जाएंगी. इनके जरिए आप स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं, उनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज किसी स्लाइड को डुप्लीकेट या डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं. स्लाइड शो मी व्यू. It is full screen presentation mode that allow you to view each slide of your presentation on full monitor screen with various इफेक्ट अप्लाइड ऑन द स्लाइड. स्लाइड शो व्यू के अंदर क्या होता है, जब प्रेजेंटेशन आपको तैयार हो जाती है तो फुल कितने इफेक्ट लगाए हैं, एनिमेशंस लगाए हैं, ये सब आप उसमें चेक कर सकते हैं. इंसर्ट न्यू स्लाइड. अब ये क्वेश्चन है कि हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. क्लिक ऑन द स्पेस बिटवीन टू स्लाइड थंबनेल इन स्लाइड टैब. A blinking bar will appear between two slides. Click on the insert menu, then click on the new slide option. New slide button on the formatting toolbar. Slide layout task pane appear. Select the slide layout, as well as you can press Ctrl+M. This is a shortcut for insert new slide. How to copy a slide. Select the slide in the slide tab, select insert menu, then click on duplicate slide option. So with the help of duplicate slide option you can make a duplicate copy of existing slide. Delete a slide. To select the non-continuous slides on the slide tab by holding down the Control key. Select consecutive slides by holding down the shift key. Click on edit menu, then click on delete slide option. Moving slides. Keep the mouse pointer on the required slide. Press hold down the left mouse button. Dragging the mouse pointer will move an insertion point between the slide thumbnail. Release the mouse button. Creating the summary slide. It is used to create a content slides your presentation. Switch to the slide shorter view of your presentation. Select all those slides of your presentation whose title you want to include the summary slides by holding down the Control key. On the slide shorter toolbar, click the summary slide button. Hiding slides. Suppose you want to hide slide, so switch your presentation to slide shorter view. Shorter view चले आइए. Hold down the Control key to select the slides that you want to hide. Control and click करते हैं इन slides को आप hide करना चाहते हैं. In the slide sorter view toolbar, click on the hide button. Hide button पे आप क्लिक करेंगे, स्लाइड्स आपकी हाइड करेंगे. Choose the hide slide option in the slide show menu. Select the hidden slide to clicking on it to unhide the slide and press hide slide again button. दोबारा अगर क्लिक करते हैं अगेन उसी बटन के ऊपर तो जो आपने हाइड की होंगी वो अनहाइड हो जाएंगी और अगर अनहाइड है तो हाइड हो जाएंगी. कस्टम शो. A single presentation can be adapted to a variety of audience by creating custom show. Open the required presentation, select slide show menu, custom show options. Click new button to open, define custom show dialog box. All the slides of the current presentations are listed here. Click on the slide and press add button to bring the slides in custom show box. Repeat the same process to add other slides. Give
a name to the custom show in the slideshow box name and click OK. You can repeat the process to create more show. To run your custom show, select one from the list and click show button. तो कस्टम शो में क्या होते हैं, मल्टीपल शो आप एक ही प्रेजेंटेशन में तैयार कर सकते हैं. उन शो जब भी चलेंगे, नंबर स्लाइड जितनी भी आपने ऐड करी होंगी वो ही उतनी स्लाइड्स आपकी केवल एग्जीक्यूट करेंगी. आप मल्टीपल स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएटिंग हाइपरलिंक. Hyperlink is a connection from one slide to another slide, custom show, web page or file. You can create hyperlink text or graphic object inserted on the slide. आप hyperlink the link between the slides or between the files. आप ऑब्जेक्ट का भी लिंक बना सकते हैं, टेक्स्ट का भी, किसी भी चीज का अपना हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं. हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक. सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड विच इज टू बी लिंक्ड. जिसको लिंक करना उसको सिलेक्ट कर लीजिए. चूज द इंसर्ट मेनू, देन क्लिक ऑन हाइपरलिंक ऑप्शन. इंसर्ट मेनू से जाकर हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए. एज वेल एज यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस के. कंट्रोल के द शॉर्टकट ऑफ हाइपरलिंक. क्लिक ऑन बटन टू इंसर्ट, select slide or custom show which you want to link to your slide. A file or a web address can also be selected as a link in the slide. Click screen tip button to type a text that will be displayed when pointing on the hyperlink, which OK the link is created. Use hyperlink. Hyperlink become active when you run presentation. हाइपरलिंक हमने जो बनाया है ये हमको तभी दिखाई देगा जब हम स्लाइड शो को फुल स्क्रीन पे करेंगे. ठीक, तभी हमारा लिंक एक्टिवेट होगा. माउस पॉइंटर उस लिंक बटन पे जाएंगे ऑप्शंस पर, तो माउस पॉइंटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक हैंड. हाइपरलिंक बिकम एक्टिवेट व्हेन यू प्रेजेंटेशन रन द स्लाइड शो. ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द लिंक टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट. द पॉइंटर चेंज इनटू द हैंड शेप. टू ओपन लिंक फाइल और स्लाइड, click left mouse button once. Action button. Action button are ready-made buttons which are used to perform some specific task in the presentation, just as the play sound or movies on the slides. Select the slide to insert a button. Choose slideshow menu action button option, then select the button from the submenu. Bring the mouse pointer on the slide and drag on the desired place to draw the button. An action setting dialog box will appear on the screen जब आप क्लिक करेंगे. In the hyperlink to box selected the buttons. यहाँ भी hyperlink ही काम करेगा. Click play sound button option to play a sound, then click on OK. Adding button. Click on master from the view menu, then click on slide master. A master slide will display in the slide pane. Insert the action button on the master slide, then click close master view. How to insert diagrams. Suppose if you want to diagram different diagrams in your presentation, so how? Various diagrams like cycle, target, pyramid, etc. can insert in the slides. Select the slide, click diagram organization chart button on the drawing toolbar. Diagram gallery will be appear on the screen. Select the type of diagram. जो भी diagram आपको लेना select कर लीजिए. Then click on OK. To add more shape to the diagram, click insert shape icon button on the diagram toolbar. Use auto format to change the style of the diagram. To add text to the elements, click inside the diagram element. After finishing, click outside the diagram. जब फिनिश हो जाए डायग्राम के बाहर क्लिक कर दीजिए. To animate the diagram elements. अगर आपको कोई स्पेशल इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो how? Select an animation for the whole diagram and using custom animation task pane. Select the applied animation and click down to select effect option in it. On the diagram animation tab, select the required option in the group dialog drop down box. Then finally click on OK. How to setting up slideshow. Click slideshow menu, setup show option. A setup show dialog box will be appear on the screen. Select the option all or frame from the to show a specific slide from the show slide box during the slideshow, or custom show from the list. Check the option loop continuously and escape if you want to continue the slide. Check the
option show without animation if you don't want to run animation. Select the motion manually in advanced slide box if you don't want to use slide timing. Then finally click on OK. So here again 4 question for you, जिसके आंसर अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको सेंड करने हैं. दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं. नॉर्मल व्यू इज द पावर पॉइंट व्यू. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर डिफॉल्ट, यूजुअल और नॉर्मल. नंबर 2 स्लाइड टैब इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और रीऑर्डर. नंबर 3 कंटेंट स्लाइड्स फॉर ए प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड. स्लाइड्स ऑर्डर व्यू के लिए, मास्टर स्लाइड के लिए या समरी स्लाइड के लिए. नंबर 4 एक्शन बटन इज ए बटन, नेक्स्ट बटन, रेडीमेड बटन या प्रीवियस बटन. अब ये इसके आंसर क्या है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में देने हैं. और जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. तो जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो में रिलीज होगी आपकी क्लास के लिए वो आपको मालूम पड़ जाएगी. बाय.